कमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीपरम्पराम् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्माद्गुरुम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ऋषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिघातभेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे षञ्चतुष्पदे अलोहादेवित्वं विष्णुना धृता पञ्चधारयमां दिग्वित्रं गुरुजासनं तीक्ष्णदंष्टमहाकाय कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि। सभ्ये विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वरदरं विष्णुं हरिवर्णं चतुर्भुजं ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्रीवाणिहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ श्रीसीतारामाभ्यां नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामादिदेवताभ्यो नमः। उदायनाचार्येभ्यो नमः। प्रारम्भकालस्य मुहूर्तमस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो प्रारम्भकालस्य मुहूर्तमस्तु। अथ सङ्कल्पः। जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे श्रीमद्साबरमती नद्याः शुभे भागे गुजरातप्रदेशे अहमदाबादनगरे भाग्यनगर्याम् अस्मिन् वर्तमानकालव्यवहारिके प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये इदानीं मङ्गलकर श्रीपराभवनाम संवत्सरस्य श्रीसूर्ये उत्तरायणे वर्षा ऋतौ फलप्राप्त्यर्थं मम परिवारस्य भविष्योज्ज्वला प्राप्ति कामनया सर्वकष्ट सर्वदुःख निवारणार्थं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदमानः शृण्वन्नोतिविश्वेदसादनं वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नसन्तो कलशजलेन पूजाद्रव्याणि प्रोक्ष्य दैवं प्रोक्ष्य विनाशने शिवदाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ईश्वरेण सर्वभूतानां ताम्यपवे श्रियं नन्दं समर्पयामि। ॐ महेव भोगैः परीदिवाहुज्याय एति परिवारमानहस्तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान्मानुमागुं सम्परिवार विस्ततः नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। शिवदाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। महागणपते नमः। कर्पूरमङ्गलमहानीराजनं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पत्रपुष्पैः देवाबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्माबन्धनं देवस्य रक्षान् धारयामि नमस्करोमि। करिष्ये। ॐ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुस्तामार्थसिद्धये। ॐ यो रुद्रो अग्नो यो अप्स्यो दरिस्यो रुद्रो विश्वभुवनाव्यस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। आप्यायस्व समेतुते विश्वतः संवृष्णियं संवादे मध्यमाने मोदरौ उत्पन्नो दुर्गाकुम्भविद्युतो विष्णुना स्वयं नमस्कारान् समर्पयामि। अनेन मया कृतपूजाराधनेन आवाहितकरुणमास्तु प्रियन्तान् नामः। ॐ
ओम कलदस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमाजतः प्रातःकालीन सुनेनानाविधनैवेद्यं निवेदयामि ओम अन्नपूर्णे तथा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे शिव शंभो कुमार शिव शंभो कुमार शिव शंभो शिव शंभो उपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदमानश्चिन्नोतिविस्सेदसादनम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ॐ गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं भवामहे कविं कविम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानशृण्वन्नोतिविस्सेदसादनम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ॐ गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं भवामहे कविं कविम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदमानशृण्वन्नोतिविस्सेदसादनम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ॐ गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ॐ गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ आदिस्य वर्णेन तपसो जातो वनस्पतिस्तव वृक्षो बिल्वः तस्य फलानि तपसा दन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी स्वाहा ॐ उपैतु मां देवसः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो विराष्ट्रे सिद्धिर्विमध्यं ददातु मे स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा वाजधीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वरदा भवन्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः शीघ्रमेव स्थिरः
त्रिषा गृह्णामि सत्याः करिष्ये ओम यो देवस्तुतिदास्तानं द्योधर्मादिगोचरः तेरैतस्येद्वर्गस्तद्वरे निवास्महे स्वाहा ओम यो देवस्तुति पञ्चशत सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश ओम देवदेवेषु यज्ञक्तु स्वाहा वाजे स्वाहा वातेधाः पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवस्तमिन्द्रतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीतयज्ञैः नृतेन त्वं तनवो वर्धय श्रुत्या सन्तु यजमानस्य कामाः ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः पूर्णाहुतिं समर्पयामि ॐ शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुगामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविडञ्च मे यन्ता च मे भर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महच्च मे संविश्च मे ज्ञातृञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे श्रीलञ्च मे वयश्च मृतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे सूसा च मे त्रिनञ्च मे स्वाहा पूर्णाहुतिं समर्पयामि वसुधारां समर्पयामि आवाहय देवताभ्यो नमः सुप्रीताः सुप्रसन्नाः वरदाः भवन्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे दक्षिणां समर्पयामि अपनी देवता से प्रार्थना करेंगे दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा बना लेंगे देहि मे यज्ञनारायण सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु नमो
It gives me immense pleasure to welcome you all on this special occasion. Yes, it is very special because of a couple of reasons. It is special because today is the inauguration of our new canteen facility. It is special because we are celebrating our annual day today. And most importantly, it is really special because today is what? Ashad Sud Duj, रथ यात्रा दिन. आज का एक ही दिन पूरे साल में ऐसा है कि ऑर्डर जो है ना वो रिवर्स होता है. आइंदा हम लोग मंदिर में जाते हैं भगवान जी के दर्शन के लिए. आज का अकेला दिन एक ऐसा है पूरे साल में भगवान जी खुद रथ पर सवार होके दर्शन देने के लिए घर घर जाते हैं. So it makes it really very, very special. ये प्रोग्राम का जब प्लानिंग हो रहा था तो लग रहा था कि यार बारिश आएगी, और बारिश आएगी तो ऑफिस वहाँ है, कैंटीन यहाँ है, वेन्यू यहाँ है, बारिश में सबको तकलीफ होगी. सोचते सोचते ये भी सोच लिया कि शायद हम पोस्टपोन करें, बाद में करें प्रोग्राम. पर फिर लगा कि बारिश की बूंदों की तरह गिरकर संभलना भी जरूरी है. बूंदों की तरह गिरकर संभलना भी जरूरी है. जिंदगी की बारिश में हर पल संवरना भी जरूरी है. जिंदगी की बारिश में हर पल संवरना भी जरूरी है. ठीक है, जैसा मैंने कहा, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग आवर एनुअल डे इंस्टेड ऑफ 1 अप्रैल. स्वामी जी का स्वागत है. Our guest of honor has arrived. Please welcome him with big round of applause. सबको मालूम है आइंदा हम 1 अप्रैल को हमारा एनुअल डे मनाते हैं, पर इस बार नहीं हो सका
thanks to the unpredictable president of USA, Mr. Donald Trump. उनकी वजह से नहीं कर पाए तो सोचा चलो आज तो है अच्छा दिन कर लेते हैं. ओके, सो विल प्रोसीड फर्दर, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम. आज का जो प्रोग्राम है काफ़ी जैम पैक्ड है. आज के प्रोग्राम में सी एज यू नो द लास्ट ईयर हैज़ रिमेंड वेरी रिमार्केबल फॉर ऑल ऑफ अस. प्रसाद ग्रुप की हर एक कंपनी ने काफ़ी नए माइलस्टोन्स अचीव किए हैं. देयर आर लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स in terms of quality improvement, in terms of launching of new products. काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे 4 लीडर्स हैं चारों कंपनी के, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा. दे विल बी टॉकिंग टू अस इन डिटेल अबाउट इट. दे विल शो अस. पाछड़ को ने कहने का आवाज़ नहीं करने. सो आई रिक्वेस्ट ऑल 4 प्रेजेंटर्स लेड बाय मिस्टर दिनेश पाल, प्लीज़ आप आ जाइए. एक के बाद एक 4 प्रेजेंटेशंस है. उसके बाद एक HR इनिशिएटिव का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है. हम एम्प्लॉइज़ को जो लॉन्ग सर्विस रिवॉर्ड देते हैं, अवार्ड देते हैं, उनका ये भी एक छोटा सा प्रोग्राम है हमारा. CSR एक्टिविटी भी दिखानी है, थोड़ी सी बात करनी है उसके बारे में. तो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन एंड लेट्स मेक इट क्विकली. थैंक यू वेरी मच. Good afternoon, everyone. Myself Dinesh Pal, working as an operation head. I am here to present Prasad Cock Technique. Today I will like to share our big wins from last year in terms of quality, new development, milestone, and our goals for this financial year. We would like to start with the quality. We bought out parts failure by 80% using the AI and 8D methodology to fix the root cause. We implemented in-house validation process under real condition to deliver first time right product to our customized orders. About the new development, we developed the liquid dosing system. The application is to dose liquid master batch and additives in IM and recycling compounding line. The second product we developed for recycling material flex handling system. Application flex conveying, dosing and mixing. This is what we developed for our prime customer. The product is heat exchanger with CRT 14,000. The purpose of developing this heat exchanger with CRT was to utilize the energy, waste energy, to eliminate the heaters and to optimize the operating cost. Last year milestone, we crossed 180 CR revenue and being the market leader. Second, fastest 100 crore within the group company. And third, 25% increase in total production volume across all the product categories. Roadmap for financial year 26-27, this year we wanted to deliver even better quality and hit milestone that help us to grow. In quality, we decided reduce cost of poor quality and warranty claims by 20%. For new development, our R&D team is working for the new raw material, I will say, crystallizer for amorphous rPET. It is a critical application or critical flake drying process. The second development is gravimetric 100 with 8 components. Application handling multiple component recipe with gravimetric system, useful for BFL, IM pipeline pipe plants. Roadmap and acceptation outcomes, major milestone for this financial year. Optimize the manufacturing for capacity expansion to increase the revenue by 30%. Second, reduce installation and handover time by 15% for any of the projects. Thank you.
Good afternoon. I am Jignesh Dave. I had Newcon operations head. Newcon achieved 100 crores last year and was the fastest company to achieve this. Okay. Few milestones which we achieved last year. The main was Reliance, the 11 KTS project, in which it was a huge learning for the whole team. It was like all the compliances which were new for us. We had gone through those 10,000 plus pages to understand the compliance, studied them, and delivered the project to the satisfaction of the customer. Gujarati, that's Wagh Bakri, is again another project in which we used a 6-batch mixing system and delivered it on time with the required quality. Few photos which can show how the system and the quality of Newcon is. Newcon is committed to customer service and quality. New developments, we developed a movable bin which can be moved as per the requirement of the customer whenever it's required. This is especially used for sticky and free flow material. S6, the screw feeding, which we can clean it, we can remove it and clean it. This is normally used in food industries for sticky material, especially in Wagh Bakri. This was delivered. Again, one more milestone which we achieved, which was liquid, in liquid systems. Okay, the loss weight was 1 gram in 100 grams. This is our future. We look at our future plan to make a state-of-art factory with all the processing of rava, maida, besan and all for the food industries. We have entered into solar, building material, WPC, as well as PVC composite. One more development which we are looking at is developing mixture, the hot and cold mixture. Our growth plan. This is how we look at Newcon for coming 5 years. Okay, from today to next 5 years, we look at 200 crores. A list of satisfied customers who are working with us, having long-term relation with us. Thank you. Good afternoon. My name is Kashyap and working in Prasad as a product manager for the granulator and conveyor belt product. So for the quality in the granulator, we have almost 50 plus improvement in our own indigenous make granulator compared to our previous model. So these are the this is our new model which we have developed in, totally 100% indigenous and exhibited in Plast India exhibition. Major milestone for the tough engineering plastic like a big voluminous part, we have made slow speed granulator. For the new development, we have developed the 30 series for the HDP bottles and PET preforms. Another model is under manufacturing
for the automobile pipes and HDP bottles. We also received our biggest model for order for the pipe industry. So these are our main 7 features that we have implemented in our new model compared to our previous. These all are our partners in progress. Okay. For the conveyor belt, we have joint venture with the Crisaf, Italy. Belt product is our almost we can say plug and play and fit and forget product. So no need to improve in design level. So aesthetically improve. So previous development we have made one conveyor belt for the finished good box handling from first floor to ground floor. It is a U-type shape. Another model developed T conveyor with both side weighing scale for the preform and caps industry. Also exhibited in Plast India. So this one is the previous year milestone for the HDP bottle conveying from one shade area to second shade area for the assembly line. Filling line. For this year development, we have received order for the automobile industry for the part inspection. It is a double-decker type built with anti-static bar to discharge the anti-static. We have also received the order for the syringe, the pharma syringe application to ground floor to first floor and then divert to 3 numbers of assembly lines. Whenever they require the one by one, they feed the machine. These are our progress partners. Thank you. Good afternoon. Myself Sagar Shah. I am heading the Prasad CWK Operation Department. Welcome. Basically, Prasad CWK is making the industrial chillers and temperature controllers, and these are our total product portfolio. We are making screw chillers, air chillers, compact water chillers, and temperature controllers. Basically, for the quality and product improvement, we have a 142 CR revenue growth. We make 1206 units as all chillers and 700 units as temperature controllers. One bigger achievements last year we have did with the applying in our all product a micro channel heat exchanger instead of conventional type copper and aluminum heat exchanger. With this we have saved lots of and then new product development and major milestone coming in the next slides. Regarding the micro channel heat exchangers. This is our major quality development this year, last year. We save about 35% lower refrigerant charge, up to 12% of the lighter chiller, reduce the environmental impact, and easier service and maintenance. In a quality achievement, we product reliability and operational performance and improve the corrosion resistance for the longer life compared to the older versions. Successful implementation in most of our Vaco series, and next year also we are implementing in all our series. Regarding the new development, last year we have developed one biggest screw chiller with inverter based screw compressor and inverter based fans. This chiller can run with the plus 10 degree ambient temperature to 50 degree ambient temperatures without having any troubles. Second development we have done in a temperature controller. Earlier we have up to 150 degree oil temperatures. Now we have up to 300 degree oil temperatures with us.
Third development we have done in our PBF series with the air chiller. We have all inverter-based air chiller in air-cooled compressors. One of the major milestone last year we have done is supplying 400 TR capacity in one of our Canada customer. This is the first ever project we have done, and the major thing is then no one is going to the Canada. Each and every installation is done by our team based on from Ahmedabad office. Next year, the running year, we have the growth of 168 years we have planned, 1400 as the chillers and 1000 units. Quality achievements, we are going to develop all our chillers with the micro channel heat exchanger to getting more efficient product. And new development, we are going to develop the chiller with the Freon, which can be acceptable to the European market also. And high water flow battery is also going to be developed, and a low temperature chiller we are developing. Major milestone, we are going to execute 15 new projects, which is a major milestone this year. Thank you. Thank you, all four of you, for telling us in detail about our achievements, milestones, our future plans, where we are going. And now, we are coming to a different chapter. As everybody knows, we have about 130,000 square meter of land. 130,000. We have 13 plants fully equipped with machinery. But our biggest asset is not the land. It is not the plant and machinery. It is those 1,400 people who are in our team with us. And we have always acknowledged their contribution. And in line with this, I am now going to call upon some people. Every year it's a tradition that we reward long service, people with long service, people who have contributed, given 20 years of their life, 25 years of their life. And all those people are getting recognized during the annual function. So I call upon, every year we have minimum 5 people who are eligible for this long-term service award. So this time, also 5 people are there: Vijay Parmar, Hiren Mandalia, Jaswant Patel, Sagar Shah, and Girish Rohit. I invite all and request our founder and chairman, Mr. Prakash Shah, to come to the stage for their felicitation. Thank you. Oh. भाई तालियां थोड़ी जोर से लगनी चाहिए। 25 साल अपनी लाइफ के दिए हैं, तो ताली तो बनती है। हिरेन मांडलिया, प्रसाद कॉक टेक्निक एंड सागर शाह, यू जस्ट मेट हिम। हिरेन भाई एक बे शब्द तो कहो तमे। आओ 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 आओ। હેલો એવરીવન, થેન્ક યુ. આજે હું કંપની સાથે 20 વર્ષના અદ્ભુત સફરની ઉજવણી માટે અહીંયા ઊભો છું, એ બદલ સન્માન અનુભવું છું. 2 દાયકા પહેલાં જ્યારે હું સંસ્થા સાથે જોડાયો ત્યારે કલ્પના પણ નહોતી કે આ યાત્રા આટલી ફળદાયી નીવડશે. અહીં મેં શીખ્યું એ એકાઉન્ટન્ટ બનવું એ માત્ર સંખ્યાઓ, બેલેન્સ શીટ અને નાણાકીય નિવેદન વિશે નહીં, પરંતુ જવાબદારી, અખંડિતતા, ચોકસાઈ અને કંપનીના વિકાસને ટેકો આપવા વિશે છે.
મારામાં વિશ્વાસ રાખવા, મને શીખવા, વિકાસ કરવા અને મારી કંપનીમાં યોગદાન આપવા બદલ, તક આપવા બદલ હું મેનેજમેન્ટનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. હું મારા સાહેબ અને સાથી કર્મચારીઓનો પણ આભાર માનું છું કે તેમના સમર્થન અને સહકારથી મારા કાર્યમાં આનંદપ્રદ અને અર્થપૂર્ણ બનાવ્યું. દરેક પડકારને મેં કંઈક અમૂલ્ય તક શીખવી છે. ગર્વ છે કે આ સંસ્થાના વિકાસ અને સિદ્ધિઓમાં મારો પણ ભાગ છે. થેન્ક યુ. 20 વર્ષ, 20 years in one organization is possible. But 20 years with multiple persons, with multiple time is only possible in our Prasad family. For that, I am really thankful to all our director, Prakash sir, Bhavin sir, Dhruv sir, Rosni ma'am, and all the family members and all our supported staff members who have supported me in each and every fall and rise. Really, let me clear one thing, that 20 years of journey is not possible with multiple person, because in our group, all our top management director give us lots of freedom of accepting any challenging work, freedom of exploring your own ideas, making family atmosphere. Even sometimes I also feel that our own family members are coming here lots of time with very much, बहुत सारी वो cultural activities में आते हैं, एक दूसरे के साथ वो bonding होता है. वो लोग खुद हमको ऐसे बोलते हैं कि ये कंपनी छोड़ के कभी मत जाओ. Lastly, in one word, I will say you, this is our second home and second family, and this family, this group is give us the liberty to expand our own wings, to fly in the sky without having any fear of failure. Thank you very much. Thank you very much, all directors. થેન્ક યુ પ્રસાદ ગ્રુપ. 20 વર્ષ મેં અહીંયા પૂરા કર્યા છે, તો એની પાછળનું રીઝન મેન તો ફેમિલીય વાતાવરણ છે. અને હું આજે જો આ સર્ટિફિકેટ લઈ રહ્યો છું, મારા કરતાં વધારે ખુશી મારા કોક ટેકનિકના દરેક સ્ટાફ, વર્કર્સ અને મેનેજમેન્ટને બધાને છે. તો આજે એમણે મારા પર જે વિશ્વાસ મૂક્યો કે 20 વર્ષ મેં અહીંયા પૂરા કર્યા, તો એની પાછળ કંઈક તો હશે જ. તો થેન્ક યુ વેરી મચ બધાનો, અને થેન્ક યુ. આભાર. This is our second home. I think nothing more can be said about this. This is my second home, he said. 25 साल जिसने दिए वो कह रहे हैं. तो there are more reasons also why people feel like a family here. And I'm going to talk, we are not a corporate, we are a family. हम आज भी बोलते हैं हम प्रसाद परिवार है. तो परिवार में साथ में मिलके हम जो खुशियाँ बांटते हैं और जो कुछ भी करते हैं, उसके बारे में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बीइंग ए HR पर्सन मैं करता हूँ विथ Sachin's permission. Sachin, are we ready? Yes. Okay. Yes, we are here to celebrate the excellence. The excellence is not only in one field or one department. We have 11 departments, that makes our playing 11, you know, which includes from marketing to stores, every department. One people, one passion, one progress. At Prasad Group, we really believe that life is a celebration. So we always look for, celebration. We always look for an opportunity to celebrate and enjoy. So what kind of celebrations are there? As you can see here, there is annual day, sports fest, festive celebrations, employee engagement programs, CSR activities, regarding which Chintan is going to talk in detail. Lots of activities take place. Our calendar, festive calendar starts from the month of August. And we start all our activities with the blessings of Lord Shiva, Laghu Rudra. That is the first program we have. And then followed by blessings from Ganpati Dada, Ganpati Bappa. Just small video clip. Ganpati Sthapna.
and followed by Visarjan. Okay. Navratri, as you know, is the biggest festival of Gujarat. एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वो तो पूरी 9 रात और दशहरा तक चलता है. तो you can see we are together. We have a big festival Navratri. We celebrate in a big way. You can see. Also it is जो performers होते हैं डांस करते हैं, जो गरबा करते हैं. For all age group we have lots of prizes for them. You can see one photo, that's just one sample, you know. There are prizes for the best costume, prizes for the best dancers, best couples, for different age groups also. Even my age group, there is a prize, okay. And you can see a glimpse of the decoration. But a picture can't say so much as the video can tell us. Acha, okay. Fine. Celebrating humanity, very important. We have decided since couple of years that Mr. Prakash Shah, our chairman and founder, उनका जो birthday आता है, that is 13th of November. And 13th of November has been declared in our company as a donors day, blood donation day. और you can see लंबी कतारें होती है. Lot of people, most people are sitting here who have donated blood last year. I can see the faces, familiar faces. Around 300 people line up since morning. And they are so keen to give blood because they are celebrating humanity. They want to save human lives. Beyond winning, normally we always talk about who won and who lost. Our sports fest is always beyond winning. There is nothing like winning. It's more like having fun, more like getting together, more like doing something together. That's the thing. And a small video about the kite flying. As you know, every Gujarati is crazy about kite flying. So we have a kite flying competition also. Even I am crazy about it. Even our Dhruv sir is crazy about it. Even Prakash Bhai Shah is also crazy about it. Everybody enjoys together. This is such festival. Okay, celebrating the spirit of teamwork. This is all about cricket tournaments. We have 12 companies and 10 different teams. You know, they play with each other. We hire a cricket ground, proper ground. And league matches are played there, semi-final is played there, and for the final match, there is you can see one of the picture there. It's a night match. That match is played under the floodlights. That we have started now. And the whole tournament is called PPL. It is not IPL. PPL, Prasad Premier League. Okay. Spirit of strength and kindness. We celebrate that also. Why not? So this is one suggestive image of celebration of Women's Day. Togetherness is happiness. Now comes the main function, the largest function we have in a year, that is 1st of April. As I said, we always feel we are a family. We have behaved and stayed like a family together. So togetherness is happiness. This is one function where even the family members are invited. A worker, a staff member, a manager, anybody. They have a family, they have spouse, they have children. And we have activities for everybody, every group. You can see the cooking competition or the drawing competition for the kids, or maybe Rangoli competition, lot of games for the kids, musical chair you can see, and fancy dress competition. Very eventful day
for all of us, where about 700, 800 people participate. Also, we have Satyanarayan Katha. Traditionally, we have been doing it for past maybe 30 years or so, or maybe more than that. We have been doing it since inception, I guess. So सत्यनारायण जी भगवान की कथा होती है, उनके आशीर्वाद से नया साल, फाइनेंशियल ईयर शुरू करते हैं. एम्प्लॉय रिकग्निशन जो अभी हुआ वो भी होता है तभी. ये इवन स्टूडेंट रिकग्निशन, वर्कर्स जो है हमारे, उनके जो छोटे बच्चे हैं 10th में 12th में, वो लोग जो अच्छे रिजल्ट से पास होते हैं उनका भी रिकग्निशन होता है और उनको अवार्ड मिलता है, सर्टिफिकेट एंड द कैश अवार्ड ऑल्सो. So in nutshell, we can say it's one team, one goal, one family, one legacy. That is all about Prasad Group. So, how we can achieve all these things? You know, इतने achievement कैसे होते हैं? When I becomes we, the impossible becomes possible. Thank you. Thank you very much. Yeah, I invite Mr. Chintan to carry on the next presentation. Good afternoon. જમવાની અને તમારી વચ્ચે હું જ ઊભો છું અત્યારે. સો આઈ એમ સો સોરી. सीरियस फेस बनाकर मत बैठिए प्लीज. वेलकम टू ऑरेंज फैमिली. कुछ चेहरे यहाँ नहीं दिखेंगे क्योंकि ये बिजनेस प्रेजेंटेशन है सेल्स टीम का. सेल्स टीम क्या करती है? ड्रिवन बाय वैल्यूज. वंस अगेन, तो बीइंग जॉइंट वेंचर 8 अलग अलग यूरोपियन टेक्नोलॉजी जायंट्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, सबको पता है प्रसाद इक्वल्स टू ग्रोथ. बराबर? जिन्होंने 20 साल निकाले उनको मुझसे ज़्यादा पता होगा. तो अगर यहाँ रहना है तो आप ऐसे नहीं जा सकते. या तो ऐसे जाना है या तो बाहर चले जाना है. ऐसी जर्नी नहीं है यहाँ पे. वंस अगेन, ग्रोथ. उड़ना है हवा में तो प्लेटफॉर्म तो चाहिए, सीधे तो उड़ नहीं पाओगे. सो ये करते 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 छोटा सा एक समरी बनता है. विजन के सक्सेस के लिए स्ट्रेटेजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसलिए हम सब आज इकट्ठे हुए हैं. एंड फाइनली ग्रोथ. कैसा ग्रोथ हुआ? आदमी चाहिए, ग्रो करना है तो हवा में से तो काम होगा नहीं. सो एडिंग 5 सैटेलाइट ऑफिस इन लास्ट 5 years. एक्सपोर्ट फोकस किया. ऐसा नहीं बोल सकते कि हम बहुत ग्रेट करते हैं, बट अच्छा करते हैं. जितना करते हैं उतना अच्छा करते हैं. एंड ये नंबर्स थैंक्स टू OEM ऑल्सो. वैसे तो 40 साल हुए, बट 25 साल का डेटा खंगाल कर बोल सकते हैं कि हम हर एक घंटे में एक मशीन डिस्पैच करते हैं. मैंने बोला था ना, ऐसा नहीं है. गिरोगे तो एक बार चांस मिलेगा ऊपर जाने का फिर से. यहाँ पे ऐसा रास्ता ही नहीं है. ग्रो कर रहे थे. सी वी आर ग्रोइंग. लोग बोलेंगे मार्केट बड़ा हो गया, अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई. सब कुछ बढ़ ही गया तो बिजनेस भी बढ़ेगा. पहले 8 कॉम्पिटिटर थे,
आज ऑर्गेनाइज्ड 33 कॉम्पिटिटर्स है, स्टिल वी आर ग्रोइंग। सेम OEM, सर आपको बटर नहीं लगा रहा, बट they are one of the largest contributor of our growth। और ये इसलिए भी पॉसिबल नहीं हुआ कि हम स्पेशल प्राइस देते OEM का, नहीं, हम OEM स्पेसिफिक मशीन देते हैं, सो दिस वॉल्यूम इज गोइंग अप। ये सब करने के लिए हम क्या करते होंगे? ये क्लोजिंग डे का फोटो है, तो ये ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस नहीं है। मार्केट में जाना है तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? नेगोशिएशन। नेगोशिएट करोगे तो ही तो बेच पाओगे। नेगोशिएशन कहाँ सीखोगे आप? आप केस स्टडी बना के नेगोशिएट नहीं करा सकते। नेगोशिएट सबसे अच्छा होता है झगड़े में। जिसमें ऑपरेशन भी इन्वॉल्व है, सर्विस भी इन्वॉल्व है, हम बेचने वाले तो है ही। फिर आता है इंस्पिरेशन। मैनेजमेंट खुद उतर जाता है मार्केट में हमको इंस्पायर करने के लिए। इंस्पिरेशन चलेगा तो कितना चलेगा? आप किसी को कितना इंस्पायर कर पाओगे? एक स्पाइक आएगा एनर्जी का। फिर मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन भी कितना चलेगा? सब लोग सिंक में आके काम कर सकते हैं मोटिवेट होके, बट यही चीज 40 साल से जो कंटिन्यू करते आ रहे हैं ग्रोथ पैटर्न में, वो करना है तो क्या करेंगे? हम सब मतलब सिर्फ सेल्स नहीं, हम जितने भी बैठे हैं वो सब, अगर कोई उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं ना, फिर हम कभी पीछे नहीं देखते। तो हम जब भी कंपनी में एंटर हुए 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले वाले लोग भी है, कुछ मेरे जैसे भी है छोटे, तो शुरू में नहीं पता था, बट पहले 2-3 साल में पता चल गया था कि वी आर वर्किंग फॉर अ पर्पस। कोई भी ऐसा है जिसको पर्पस मालूम नहीं था यहाँ काम करने का? सबको मालूम था ना। गवर्नमेंट अपना काम करती ही है देश को ऊपर ले जाने के लिए, बट देश में स्कूलिंग, चाइल्ड लेबर और हाइजीन, ये 3 चैलेंजेस ऐसे हैं कि दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट अपने सारे पैसे झोंक दे तो भी नहीं काम हो पाएगा। यू नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। तो हम सबके संस्कार में वो कहाँ से आया? तो हम ऐसी अलग अलग 50 संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं जो हमको हर दिन अच्छा करने का मोटिवेशन देती रहती है, और हम उससे इंस्पायर्ड है, और हमें हमारा पर्पस पता है, सो वी आर डूइंग बेटर एंड द बेस्ट। ऐसी एक संस्था है नव भारत जागृति केंद्र। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में हम इन्वॉल्व है ऐसी ये संस्था मैंने मेरी लाइफ में पहली बार सुना था। आर्ट ऑफ लिविंग का मुझे पता था, बट अबो सर्वोदय मुझे सबसे पहले इसका पता चला कि हम इस एरिया के लिए कुछ करते हैं। ये बिहार और झारखंड के ऐसे एरिया में है जहाँ पे इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके पास 2 ही चॉइस है, या तो मम्मी पापा के साथ बाहर जाके काम करके नौकरी करके पैसे कमाना, या मर जाना, बीच वाला रास्ता नहीं। और इतने ब्रिलियंट लड़के लड़कियां जिनको पढ़ना है, तो हमने एक प्लेटफॉर्म दिया उन्हें
फैमिली में पूरा एक ट्रेडिशन है कि जब भी किसी का शादी होता है तो उसके नाम से एक ट्रस्ट बनता है, और वो ट्रस्ट में एक बोर्डिंग स्कूल बनता है जहाँ पे हम ऐसे बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। दे स्टे हियर, लिव हियर, खाना खाते हैं, सुबह अपने घर से निकल के आते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करके खाना पीना खा के फिर वापस जाके अपना रोज़मर्रा का जो भी काम है, खेत खलियान का, पशुपालन का, वो भी करते हैं। इस तरह से हमने 450 से ज़्यादा बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया। ऐसी दूसरी एक संस्था है, पहले फेमस थी पोलियो फाउंडेशन के नाम से, नाउ इट इज हेल्थ एंड केयर फाउंडेशन। सेम निःशुल्क सारवार। अब कितने लोगों की करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार। ये लोग साल में करीबन 1 लाख लोगों की निःशुल्क सारवार करते हैं। हम यहाँ सिर्फ पैसे नहीं भेजते, हम यहाँ पार्टिसिपेट भी करते हैं। हमारे मैनेजमेंट में से भी लोग यहाँ पर ट्रस्टी है। दूसरा है श्रम मंदिर। ये एक ऐसी संस्था है कुष्ठ रोगियों की। कुष्ठ रोगी मतलब जनरली फिंगर सबसे पहले अटैक होती है कुष्ठ रोग हुआ तो। आप क्या कर पाओगे? देखो, 2 चीज होती है, या तो आप किसी को भीख दे दो या उसको स्किल दे दो। भीख दोगे तो वो आज का दिन भरपेट सोएगा, स्किल दोगे तो 99.9% वो पूरी जिंदगी भरपेट सोएगा। एग्री? तो हम वो काम करते हैं, वो हाथों से जो भी हो सकता है वो स्किल डेवलप करके। और ये ऐसे लोग हैं जिनको उनके घर पे भी नहीं रख सकते, उनके खुद के बच्चे भेज देते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो। अंत में है ये संस्था। मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये यहां बैठे हर एक के दिल के सबसे नजदीक है। एम आई राइट? आप सबने यहाँ पे कुछ या अपना दिन या अपना नॉलेज या अपना धन दान किया है। सर्वोदय परिवार ट्रस्ट ये गुजरात के ऐसे एरिया में चलती है जहाँ आज भी बिजली नहीं जाती, और अगर है तो डिसकंटिन्यूड है। साफ पीने का पानी इज अ चैलेंज। बहुत रिमोट एरिया है, सापुतारा के भी बाद के जंगल है। यहाँ आज भी कोई डायरेक्ट ट्रेन या बस नहीं जाती, आपको 2-3 सवारी बदल के जाना है या तो प्राइवेट कार में जाना है। तो उनके पास तो अपना क्या है? जमीन जो ज्यादातर बंजर रहती है। तो हमने वहां के युवाओं को इकट्ठा करके उसकी फर्टिलिटी, लाल जमीन है बट बारिश में बह गई तो बंजर हो जाएगी, तो सॉइल को रिटेन कैसे करेंगे वो सिखाया। तो आज वो खुद ही अपनी खेती करके अपना खुद का धान उगाते हैं। दूसरा है पीने का पानी। बहुत बारिश होती है बट चूंकि पहाड़ है तो सब बह जाता है, कुछ भी नहीं रुकता। तो हमने उन्हें चेक डैम बनाना सिखाया, और ये सब श्रम यज्ञ से चलता है। आप आज भी वहां पर बार्टर सिस्टम देख सकते हैं। कोई आके अपना एक दिन एक डैम बन रहा है, उसमें अपना श्रम दान देगा, 2-2 घंटे काम करेगा, तो उसको बदले में पैसे नहीं अनाज मिलेगा जो वो घर जाके पका के खा सकते हैं। तो आज भी वो सिस्टम जिंदा है, और उसी सिस्टम से उन्होंने 400 से ज्यादा चेक डैम बनाए हैं वो एरिया में, और 800 से भी ज्यादा फ्रेश वाटर बॉडीज। और हमें इसलिए ये सब मालूम है क्योंकि हम खुद भी वहां जाते हैं। आप देख सकते हो हम में से बहुत सारे लोग दिखेंगे इस वीडियो में। और जब हम में से कुछ लोग पहली बार अपनी लाइफ में वहां गए तो उन्होंने अपने बेहतरीन एक्सपीरियंस शेयर किए थे।
એ મને બહુ જ લાગી હતી, હાર્ટ ટચ થઈ ગયું હતું કે પ્રયત્નો કરવા એ બહુ મોટી જવાબદારી છે અને એની માટે પોતાના મનની પ્રબળ ઈચ્છા જોઈએ કે મારે આ સમાજ માટે કે આ લોકો માટે કંઈક કરવું છે. ટ્રસ્ટના જે સ્વયંસેવકો જે કામ કરી રહેલા છે એ ખરેખર સરાહનીય છે. થાય છે કે ફરીવાર ફેમિલી સાથે, બાળકો સાથે અને ફ્રેન્ડ સર્કલ સાથે આવવું જોઈએ ફરીવાર. થેન્ક યુ વેરી મચ સર્વોદય. दोनों प्रकार पे उनको पढ़ाते हैं और सब कुछ करते हैं, तो ये मेरा अनुभव सही रहा एक मतलब. अगर आप ओवर टाइम करते हो ना तो आप हमेशा याद रखना कि आप किसी और का भला कर रहे हो. अगर हम प्रसाद में जुड़े हैं सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑल्सो एंड दिस स्माइल ऑल्सो. थैंक यू. We have two distinguished personalities with us today, as you can see. We have our chief guest and the guest of honor, Swamiji. May I request Dhruv Bhai to come to the stage and introduce both of them. Thank you. टाइम जतो जाए जा. ऐसा सुना है कि मराठी आधा गुजराती होता है, तो हमारे यहाँ तीन ही मराठी है. हम लोग क्यों ये इंग्लिश में और हिंदी में बोल रहे हैं? तो गुजराती उनको समझना पड़ेगा ना, वो हमारे यहाँ आए हैं. सो एनीवे वी हैव आदित्य रत्न पारखी जी. मतलब इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टंट पर्सनालिटी फ्रॉम प्लास्टिक फ्रेटर्निटी. એન્ડ એક એવું વાક્ય કહી શકીએ કે જ્યારે ગ્લોબલ એમએનસીસ અને ચીપ ચાઇનીઝ કોમ્પિટિશન બે ભેગા થઈને ઇન્ડિયન ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ક્રશ કરી દિયા. ધીસ ટુ સેક્ટર હેવ ક્રશ ધ ઇન્ડિયન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ વેરી લેસ કંપની હેઝ સર્વાઇવડ. એન્ડ વન ઓફ ધ કંપની હુ હેઝ નોટ ઓનલી સર્વાઇવડ ઇન ધ લાસ્ટ 15 years but also shined out, and that is the Electronica. મેં જ્યારે એમને વિઝિટ કરી હતી, આપણા બધા માટે એક ઇન્સ્પિરેશન છે કે જગ્યા શોર્ટેજ પડે છે, જગ્યા શોર્ટેજ પડે છે, દરેકની બૂમો છે. તમે ફેક્ટરી વિઝિટ કરો, આપણાથી અડધાથી ઓછી ફેક્ટરીની અંદર શું પ્રોડક્શન કરે છે, એટલું બધું ટાઇટ સ્પેસ મેનેજમેન્ટ, એફિશિયન્ટ પ્રોડક્ટિવિટી, 5Sનો બેસ્ટ ઉપયોગ મેં આનાથી વધારે સારી રીતે કોઈ જગ્યાએ જોયો નથી. ઇટ ઇઝ અ રિયલી અ લેસન ટુ લર્ન. અને વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગલી કે લાઈક અસ, આપણે જેમ વાત કરી ને કે આપણા માટે હ્યુમન ઇઝ અ મેઇન કેપિટલ. પ્રોડક્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તો થશે, દે આર ઓલ્સો કમિંગ વિથ ધ સેમ બેકગ્રાઉન્ડ. એમની કંપનીના મોટા ભાગના લોકો 10, 15, 20 વર્ષથી સેમ કંપનીમાં કામ કરે છે. એમનો સેલ્સનો પણ એટ્રિશન રેટ બહુ જ ઓછો છે. એટલે ઇટ ઇઝ અ વેરી વેરી યુનિક કોમ્બિનેશન કે જે આપણને ટુડે વી સિલેક્ટેડ ધેમ કે ભાઈ આપણા માટે એક ખરેખર ગૌરવ લેવા જેવી કંપની છે, પ્યોર ઇન્ડિયન કંપની. અને નોટ ઓનલી દેટ કે આદિત્યજી ત્યાંથી રોકાયા, they were constantly growing, but they also found that we wanted to take this company to the next level. And worldની one of the best injection molding company સાથે they have a joint venture now, and they made it કે India also can sit on a global table. I really request Papa to at least felicitate Aditya ji by the garland.
I invite Aditya ji, Managing Director of Electronica Machine Tools, to come here and inspire us with his few words. Aditya ji, please. Namaste and a very good afternoon to everyone. Shri Swami Kaushik ji, our guest of honor, respected Prakash sir, Dhruv bhai, Roshni madam, and respected senior members of Prasad Group, colleagues from every department and the production department. Thank you for the honor of inviting me as chief guest for this event. આજનો દિવસ ખરે ખાસ છે. Today is truly a special day. That's all Gujarati I know. I'm also grateful that we began this morning the right way with Lakshmi Narayan Homa. We are today not just inaugurating a canteen this afternoon, we are opening Naivedyam, a space where this entire Prasad Group family or Prasad Group Parivar will sit together, share a meal, build relationship that truly makes this workplace more than a workplace as a parivar. I want to take this moment to talk about the industry that sits inside this canteen because I don't think we say it enough. And I say this as someone who is also part of the same industry. When I look at Prasad Group, I see a group which has helped raise the bar of what Indian plastic machinery is manufacturing can achieve in the world. Since 1984, Prasad Group has grown into Asia's largest plastic auxiliary machinery manufacturing group with world-class partnerships. This is not a small achievement. This is 4 decades of precision, patience, and a famous Gujarati business grit. It is something that makes each and every Indian very proud about it. Plastic processing machinery is one of those industries that rarely makes the news. Unfortunately, our industry is not very glamorous. However, our industry also very quietly powers everything. The food we eat is kept safe in plastic containers. The pipes that carry water to our farms, our home, the automobile parts in which we travel, as well as the medical components which saves lives. Every time a factory anywhere in the world runs a drying system, a chiller, or a granulator with Prasad name on it, a part of India's engineering capability is on display globally. That's something each and every person in this room should carry with them with pride. Now coming to the future of our industry, I truly believe our industry is being rewritten right now. Automation, energy efficiency, recycling are no longer an add-on or an option, but it is something the main requirement, the mandatory requirement. The world is asking for machines which use less power, waste less material, are highly productive, and gives plastic material a second, third life instead of simply one. Companies that lead on sustainability and precision, not just on price, are the ones that will define the next decades, the way Prasad Group has already defined for the last 40 years. With global economy and geopolitical landscape being rewritten right now, India is the best place to capitalize on this and emerge as the world's factory. Our country offers a rare mix of youth, talent, robust supply chain, and resilient economy. At the same time, I would like to say a couple of words to especially the colleagues who are new in this field or who are starting their career, that organizations are not built only by the people on the top table. They are built by people who show up every day and make hundreds of small, unglamorous decisions. Your name may not be on the machine, but your judgment, your discipline, your care,
are inside every unit that you make. Don't wait for big moments to prove yourself. Prove yourself in the ordinary ones, in how you train the person, in how honestly you flag a problem instead of hiding it. It all matters. It may seem like a small thing, but they turn out to be the big things. Companies with 4 decades of legacy are built exactly this way. One disciplined, honest shift at a time. In closing, as we are inaugurating the canteen today, my wish for Prasad Group is simple. May this table nourish not just the bodies, but the conversations, friendship, and trust that makes the company strong for decades to come. Thank you. Jai Hind. Thank you, Aditya ji. It was really inspiring for the team that wherever all over the world some machine is working or any plastic product is being produced, we did some contribution, some or other way. Excellent. And now is my favorite one, Swamiji. Swamiji, Swami Kaushik ji, lovingly called as Kashi Bhaiya. Very difficult to introduce. First time I met, હું એમને મળ્યો 30 વર્ષ પહેલાં બેંગ્લોર આશ્રમમાં. એટલે બેંગ્લોર આશ્રમમાં હું એન્ટર થયો અને ફર્સ્ટ પર્સન આઈ મેટ, ફર્સ્ટ પર્સન સ્વામીજી. અને એ વખતે એમનું વજન મારા કરતાં પણ ઓછું હતું. વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કારણ કે ઇઝ અ મલ્ટી ફેસેટેડ પર્સનાલિટી. ફેસેટ 1 બહુ ઓછા લોકો જાણે છે. હી ઇઝ અ માસ્ટર ફ્રોમ IIT. IITમાંથી માસ્ટર થયા. હી મેટ ગુરુદેવ શ્રી રવિશંકરજી, આપણે બધા ઓળખીએ છીએ, જાણીએ છીએ, અહીંયા આવેલા છે ઘણી વખત. અને હી ઇમિડિયેટલી રિયલાઇઝ આફ્ટર ડુઈંગ ધીસ આર્ટ ઓફ લિવિંગ કોર્સ અને મીટિંગ ગુરુદેવ કે instead of working for a corporate, what we are doing and taking the stress, let me really work with this and remove the stress and misery from the people. And tirelessly he is doing this for last 30 years. Second facet છે, he is not only art of living trainer, he is a great meditator guide, a very high level of yoga trainer. એમનું બોડીને તમે યુ ટર્ન લેતા જુઓ ને તો બિલીવ બી ના કરી શકો એટલું ફ્લેક્સિબલ બોડી છે એમનું. અને વેરી રિનાઉન્ડ યોગા ટ્રેનર ફોર ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. નહીં કે ખાલી યુરોપ એન્ડ USA. He's traveled in Russia, China, Southeast Asia and all the part of the India. Third, he speaks 6 languages. Not 1 or 2 or 3. અને fourth, he is a one-man company. What do you mean by one-man company? કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં ભલે માસ્ટર કર્યું, he is an expert IT guy. આ બધા કોર્સીસ કરાવે છે, વર્લ્ડ વાઇડ ટ્રાવેલ કરે છે. he is handling multiple trust of the art of living. આ બધા વચ્ચે એમને 10 મિનિટ 15 મિનિટ અડધો કલાક મળે છે ક્યારેક ક્યારેક. ત્યારે શું કરે? રીલ જુએ. આમ તો એ જ કરવાનું ને. રીલ જોવાને બદલે he create mobile applications or a software which is work for the spirituality. એટલે આર્ટ ઓફ લિવિંગની ડિફરન્ટ મોબાઈલ એપ, યોગા માટેની એપ, મેડિટેશન માટેની એપ, બ્રીધિંગ ટેકનિક્સ, એની મોબાઈલ એપ ક્રિએટ કરે. કોણ ક્રિએટ કરે? સો હી મીટ કસ્ટમર. આપણે ત્યાં હોય ને કસ્ટમર ડિપાર્ટમેન્ટ, એ એક જ એ જ ક્રિએટ કરે. પછી રિક્વાયરમેન્ટ ભેગી કરે. કોણ કરે? એ જ કરે. રિક્વાયરમેન્ટ ઉપરથી ડિસાઇડ કરે કે શું યુઝર ઇન્ટરફેસ બનાવવો છે. પછી સોફ્ટવેરનું કોડિંગ કરે. સોફ્ટવેરનું કોડિંગ કર્યા પછી ટેસ્ટિંગ કરે. ટેસ્ટિંગ કર્યા પછી વેલિડેશન કરે.
અને વેલિડેશન કરીને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરે. Everything is done by a single person and has created multiple mobile apps. એટલે in a one small lifespan, how a person can really develop the personality with a multifaceted, it's amazing. For me, my very dear friend Kashi, I really invite Swamiji to please come here and inspire. I request Papa to also felicitate Swamiji first. We are so fortunate કે સ્વામીજી આપણી સાથે છે. સ્વામીજી ચાલો. જય ગુરુદેવ, જય શ્રી કૃષ્ણ. આટલું મોટું બિલ્ડઅપ પછી એક જ વસ્તુ થઈ શકે, એ છે જમવાનું. ये सब कहने में एक चीज भूल गए, आई एम अ वेरी गुड स्टैंड अप कॉमेडियन. और इस बात पर अगर आप हंसोगे नहीं तो मेरा रेपुटेशन का सवाल है. बस आप सब ने आके अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताया, इतने अच्छे से एचआर के बारे में बताया, प्लास्टिक इंडस्ट्री के बारे में बताया, पर ये सबका नींव चेतना है. अगर शरीर में चेतना नहीं हो तो ये बाकी सब कुछ किसी काम का नहीं. जैसे ध्रुव भाई ने बताया, हमारा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था आर्ट ऑफ लिविंग में, तो आईआईटी करके सीधा हम पहुंच गए आश्रम. तब अगर पड़ोसी के घर में कोई अध्यात्म की ओर जाए तो सब कहते हैं कितना अच्छा पुण्य किया है. अपने घर में जाए तो कहते हैं नहीं 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 चलेगा, शादी करो. तो हमारे माता पिता भी पहुंच गए थे ध्रुव भाई के घर पर ही. गुरुदेव आए हुए थे लड़ने के लिए. गुरुदेव के सामने आए और उनमें भी वही जादू चला जो हम सब पे चला. And I'm so lucky that my mother stays with me in the ashram today. मेरे भाई यहीं पर અમદાવાદ में ही रहते हैं, तो મારું ભણવાનું બધું અહીંયા જ થયું, એટલે હું ગુજરાતી વાત કરી શકું છું. આ 30 વર્ષમાં I really feel, મને એવું જ લાગે કે આપણે કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ કે કામ કરતા કરતા પણ સાથે સાથે શરીરને પોષણ તો મળે જ છે, પણ સાથે સાથે આત્માને પણ પોષણ મળી શકે. This integrated growth is something that's so valuable. ये साथ साथ चलना इतना. और आज अगर ये इंडस्ट्री को देखें, in spite of all the competition, to have something like this, I think it's आप सब लोग को एक बहुत बड़ी शाबाशी जाती है. सो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू. हम अपने तरफ से आप सबके योगदान पर, और देखो ये कितना अच्छा शब्द है योगदान. योगदान तब हो सकता है जब योग हो और दान हो. और आप सबके बर्ताव से, आप सबके कार्यशाली से, यदि आप देखो तो इसमें योग भी है और दान भी है, तभी ये योगदान बन सकता है. नहीं तो सिर्फ अहंकार बचा रहता है. तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद गुरुदेव की तरफ से. आई एम श्योर यहाँ पर कई लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं. कितने लोगों ने किया? मेनी ऑफ अस हैव डन. और आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम यही सिखाता है. इट्स नॉट द आर्ट ऑफ लीविंग, इट्स द आर्ट ऑफ लिविंग.
जीवन जीने की कला। अक्सर हम सोचते हैं अध्यात्म माने सब कुछ छोड़ दो, पर सच पूछो तो जीवन जीने की कला गुरुदेव सिखाते हैं। तो अगर हैप्पीनेस कोर्स किया है तो एडवांस कोर्स कर लीजिएगा, एडवांस कोर्स किया है तो DSN कर लीजिएगा। किसी ने हमसे पूछा कि भैया इतने सारे कोर्स क्यों हैं? तो वर्तमान क्षण में आने के लिए हैप्पीनेस कोर्स करते हैं, पर कई बार भूतकाल फिर भी परेशान करता है। 10 साल पहले कुछ हुआ था, आज भी परेशानी होती है। एडवांस कोर्स करते हैं तो खाली हो जाते हैं, भूतकाल को सब खाली कर देते हैं। भूतकाल तो ठीक है जी, पर आगे क्या होगा? जॉब बनी रहेगी? द फ्यूचर बॉदर्स अस समटाइम्स। अगर भविष्य आपको परेशान करता है तो DSN कर लो, अपने डर से पार निकल जाओ। अगर भूतकाल सही है, भविष्य सही है, वर्तमान में रह रहे हो पर फिर भी ध्यान ना हो पाए, तो सहज समाधि मंत्र लेकर ध्यान में चले जाओ। कई लोग ये कहते हैं ध्यान करना तो चाहते हैं, पर आंख बंद करो तो पूरी दुनिया सामने आती है। तो मंत्र के द्वारा मनना त्रायतेति मंत्र ये हो जाता है। और सब कुछ ठीक है तो बैठे क्यों हो, औरों को सिखाओ, टीचर बन जाओ। एंड दैट्स व्हाई just like in any industry there's a growth path. Just imagine if you just got stuck at one level and you never grew, then there's no point being there. And that's what I say about art of living. अगर happiness course किया है तो advance course करो, आगे बढ़ते जाओ भाई। अगर अपने कैरियर में आप ग्रोथ रोकना नहीं चाहते, आध्यात्म अपने लिए क्यों रोकना चाहते हो? So whatever you talked about as your career path, I would say apply to yourself also, and that's what spirituality really is. तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आज लक्ष्मी नारायण हवन हुआ है। देखो कितनी अच्छी बात है कि हमारे पूर्वज भी यही कहे कि लक्ष्मी और नारायण साथ साथ ही चलते हैं। तो हवन का आशीर्वाद सबको, गुरुजी के आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बरसते रहे और हम सबको ज्ञान भी मिले और भोजन भी मिले, जिसके वजह से नैवेद्य हमारा वेट कर रहा है। सो लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। जय गुरुदेव। स्वामी जी ने बोला नैवेद्यम इज वेटिंग, सही बात है। तो जल्दी अभी मैं प्रकाश जी को इनवाइट करता हूँ फॉर कंक्लूडिंग कमेंट्स। पर्सन whose vision has changed and transformed all 3 verticals of our businesses, that is vacuum pumps, textile division as well as plastic division. और उससे पहले एक बात कहना भूल गया, वो जो अभी बताता हूँ आपको। कितने लोगों ने कैंटीन देखा? अपना कैंटीन जो बन रहा था, कितनों ने देखा है? सबने देखा है। तो मैंने जब पूछा, जिसने भी कैंटीन देखी, बिल्डिंग देखा, मैंने जब पूछा तो 3 शब्द निकले आज तक जितने भी देखा है। एक ने बोला इट इज अमेजिंग, दूसरे ने बोला ऑसम और तीसरे ने बोला इनक्रेडिबल। तो ऐसा काम जिसने किया है वो भी तो यहाँ बैठे हैं, तो उनको तो याद करना ही पड़ेगा। प्रेरक जी प्लीज स्टैंड अप। प्रेरक प्लीज, प्रेरक। या अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर प्रेरक शाह। પપ્પા પ્રેરક માટે એક નાનકડું સો બાય ધ ટાઈમ પપ્પા પ્રેરકનું સન્માન કરે, જસ્ટ 2 લાઇન્સ ફોર હિમ. તમે જ્યારે લાઈફમાં કોઈ પણ ચેલેન્જ લો ત્યારે તમને થોડા સાથ સહકારની જરૂરત પડે, થોડીક હૂંફની જરૂરત પડે. પ્રેરકના રૂપમાં મને મિત્ર, ભાઈ, માર્ગદર્શક, મારી સાથે ઊભો રહેનારો મિત્ર, બધું જ એક સાથે મળી ગયું. થેન્ક યુ સો મચ પ્રેરક. તમે આજે જે પણ કેન્ટીન જુઓ છો એનું એમ્બિયન્સ છે, એસ્થેટિક છે, અમારો કોઈ જ રોલ નથી, મારો કે ધ્રુવનો કોઈ જ રોલ નથી. એ જે વિઝન છે, એની જે બ્યુટી છે, ટ્રેડિશનલ ટચ છે, ઇટ્સ ઓલ બિકોઝ ઓફ હિમ. રાતના 11 વાગે એ અહીંયા ઊભો રહીને પ્લાન્ટેશન કરાવે છે, બીજે દિવસે સવારના 6 વાગે ખીલી ઠોકાવડાવે છે, કારણ કે આપણે આજે ઓપનિંગ કરવું છે. આવું ડેડિકેશન ફોર સમ પ્રોજેક્ટ, incredible. Thank you. Papa, some closing.
कैसे हैं सब लोग? आज के हमारे मुख्य अतिथि आदित्य जी, स्वामी जी तो बचपन से जानता हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग में उसके 1 साल पहले मैं ज्वाइन हुआ था। मैं तो उसे काशी ही बोलता हूँ। और हमारे सब दोस्त, आज का जो माहौल है इसमें मुझे रोशनी ने बोला कि आप कंक्लूजन में थोड़ा बोलने का, और मेरे को आज 50 साल हुआ है एक कंपनी शुरू की है। काफ़ी बार बोला है, हर एक साल बोलता है, तो क्या बोलने का, बस 2 बात कहने का जरूरी लगता है। हमारे मुख्य मेहमान आए हैं तो कि एक कंपनी हमने शुरू किया था 50 साल पहले, 1975 पीपीआई पंप से शुरू किया था, और वर्टिकल डिफरेंट एरिया में बढ़ गए। टेक्सटाइल मशीनरी भी आया और प्लास्टिक मशीनरी पाया। ये सब ग्रोथ ईश्वर की कृपा है और गुरु का आशीर्वाद है। हमने कभी कुछ सोचा नहीं था कि हम लोग ये बनाएंगे, अपने सामने से सब कुछ आया, एक में से दूसरा, दूसरे में तीसरा। जैसे हमने पंप से शुरू किया था तो हमारा पंप का एजेंट साराभाई ग्रुप था। प्रकाश भाई, आप पंप तो बनाते हैं, आप टेक्सटाइल मशीनरी बनाओ। मैं क्यों टेक्सटाइल में जाऊँ, अहमदाबाद बॉम्बे में इतनी मिल बंद हो रही है। मैंने कहा नहीं, लोग कपड़ा पहनेंगे, चलो। तो देन इट स्टार्ट, देख के कि हमारा ये कोलैबोरेशन है गामाटेक्स इटाली के साथ। 55% कस्टम ड्यूटी था इस टाइम, और वो प्रिपेयर है। तो हमने एक ट्रायल लिया, और दैट इज वी आर सक्सेसफुल एज ए प्रशांत गामाटेक्स, दैट इज सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड टुडे। और जब उसमें टेक्सटाइल्स मशीनरी बनाते, पंप बनाते, तो हमारा दोस्त बॉम्बे से आए थे। वो लोग प्लास्टिक मशीनरी में थे, पर उन लोगों को करना था हिंदुस्तान डोरोलीवर के साथ वैक्यूम फिल्टर बनाएगा। आप वैक्यूम पंप बनाते हैं तो हम आपसे साथ काम करना चाहते हैं, एंड दैट्स कन्वर्ट अस इन प्लास्टिक मशीनरी। सो ग्रोथ तो सामने से आता है, अपॉर्चुनिटी सामने से आती है। और आज हम लोग कह सकते हैं, जैसे ध्रुव ने ऐसा लिखा है, एशियाज लार्जेस्ट प्लास्टिक ऑक्सिलरी ग्रुप प्रसाद। हमारा मकसद 300 से ज़्यादा आदमी आज अवार्ड मिला, तो 25 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो वी आर टोटली फॉर्चुनेट कि हमको इतने डेडिकेटेड आदमी मिलते हैं और काम करते हैं। जैसे आर्किटेक्ट के लिए रोशनी ने बताया कि रात को 11 बजे तक करते हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन ए बिल्डिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई आर्किटेक्ट नहीं है। दिस इज ए ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट मिला है। सोलार से सेंट्रल एयर कंडीशन आप लोग बैठ रहे हैं, वी आर एंजॉय कर रहे हैं। बात ऐसी है कि हम लोग अच्छी भावना रख से काम करेंगे तो हमेशा सक्सेसफुल होना ही है। और गुरु और भगवान की कृपा हमेशा कंपनी पर रहे, वही भावना के साथ बंद करता हूँ। सर, मला मराठी माहीत नाही. As we go close to the proceeding and getting ready for the lunch, मैं इतना ही कहूँगा, ऑफिशियली अवॉर्डिंग वोट ऑफ थैंक्स, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ सर। स्वामी जी और सर आप आए, बहुत खुशी हुई, और
बहुत बढ़िया। और सब की तरफ से, एंटायर प्रशांत ग्रुप की तरफ से आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी प्रेजेंटर्स थे आज कमाल का प्रेजेंटेशन हुआ सबका, उनका भी एक शुक्रिया अदा करता है। हो जाए जोरदार तालियां। जो लोग आप बैठे हैं, सारे एम्प्लॉयज़ जिनके बारे में हमने बातें की हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं हम। थैंक यू वेरी मच। और नॉट लास्ट बट द लीस्ट, आई मीन कमिटी मेंबर्स कितने हैं यहाँ पे अभी बैठे हुए? हाथ उठाइए। कौशिक, यस। बीजा बता, पाल सर, यस। एवरीबॉडी, ओके, ग्रेट। ये सब जो हुआ है, अपार्ट फ्रॉम प्रेरक भाई ने तो 6 बजे तक खिली ठोकी है, पर इन लोगों ने 15 दिन से 20 दिन से काफ़ी कुछ काम किया है, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता है। हो जाए, प्रेम से बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। लेट्स गो फॉर द लंच नाउ, वेरी केयरफुली, अफेक्शनेटली प्रिपेयर्ड फॉर यू। लेट्स गो, थैंक यू। At Naivedyam, yes, please let's proceed for the Naivedyam. Kitchen committee, please come forward. We have a group picture.